गणमाध्यम भाव समाजर सर्वांगीन उन्नति समय खबर कागजर लक्ष्य एवं उद्देश्य विकासमूलक आभिमुख्यर अंशविशेष स्वरूप विभिन्न विकासमूलक विषयवस्तु को नहीं सबु वर्ष समय कनक्लेव आयोजन करा जायछि। चलित वर्ष मध्य समय बिजनेस इनसाइट 2022 यार एक अंशविशेष जहाँ माध्यम राज्यवासी को राज्य में उपलब्ध व्यावसायिक दिग उपरे आलोकपात करने यही आलोचना चक्र आयोजन एथिरे बहु विज्ञ दूरदृष्टि संपन्न व्यक्तित्व उपस्थित अछंती। समस्त को आम स्वागत करुचु जो माने कि राज्यर विकास को केमिति अधिक त्वरान्वित करा जिवो से विषय रे मार्गदर्शन करिवे। मंच को आसिबा पई अनुरोध करुची श्री चिरंजीव विश्वाल चेयरमैन समय चार्टर्ड अकाउंटेंट द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग श्री राजीव साहू हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ArcelorMittal निप्पन स्टील इंडिया ओडिशा फैसिलिटी श्री सौमित्र पट्टनायक MD अरुंधति ग्रुप भुवनेश्वर इंजीनियर ब्रह्मानंद मेहर हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स इंफा भुवनेश्वर श्री किशोर मोहन महांती कन्वेनर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन विंग ओडिशा मिसेस सुकीर्ति पट्टनायक डायरेक्टर ओवो फार्म प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर श्री समरेंद्र मिश्र समस्त वरेण्य अतिथि माने आम गहन आसी पहुँचले अनुरोध करुच्ची मंचासीन हेबाई। पुष्पगुच्छ प्रदान करी आमर अतिथि मानक मंचरे संबर्धित करने अनुरोध करुच्ची। समय बिजनेस इनसाइट 2022 has earned an invaluable position of becoming a platform for developmental or constructive journalism. When we think or read about the growth of the state or nation, Samay Business Insight has been promoting it for last 26 years with tenacious spirit and scintillating glimmer in its news daily since its genesis. अनुरोध करुच्ची प्रदीप प्रज्वलन करी आजिर कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करने पाई। I request all the dignitaries to kindly light the ceremonial lamp and inaugurate the ceremony, please. Like each year, this year too, Samay Business Insight has aimed at providing a unique platform for thought-provoking discussion by industry leaders, business heads and policy makers of the country to drive forward by lighting the areas that have the potential of innovation and transformational change in the growth of the state and nation. राज्यर विकास देशर विकास एवं लोक मानकर विकास एसबु दिगरे समय सर्वदा प्रयत्नशील गठनमूलक सांबादिकता को नहीं इतिमध्य समय 26 वर्ष रे पदार्पण करिछि एवं एई यात्रार विभिन्न स्तर रे विभिन्न आलोचना चक्र मध्य आमे आयोजन करिछु। लक्ष्य होछि आलोचना चक्र माध्यम रे लोकों को सचेतन करने एवं विकास धारा को आहुरी आगु को नबा गणमाध्यम भाव में आम समाजर सर्वांगीन उन्नति आम खबर कागजर लक्ष्य एवं उद्देश्य समय परिवार तरफु यह एक प्रीतिपूर्ण भेटी।
समस्त मंचासीन अतिथि मानक बहुत बहुत धन्यवाद। आमर कार्यक्रम परिण्य अतिथि मानक करकर्म उद्घाटित होइछि। I request Sri Chiranjeev Biswal, Chairman Samay, to deliver welcome address, please. Good evening to all. It's a great pleasure to have guests like noted financial analyst Rajiv Sahuji, guests from our corporate field, Soumitra Patnaik ji, Brahmananda Meher ji, Kishore Mohan Mahanti ji, Madam Sikriti Patnaik, noted woman entrepreneur who has worked hard to achieve her goals and inspire others, Somendra Mishra ji. Also, we are honored to get many intellectuals, subject experts, industrialists, corporate representatives, media representatives on the audience side. I welcome you all to our program, Business Insights 2022. This is a great moment for all of us to discuss and debate on such a topic as we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, the completion of 75th year of Indian independence. It's a long journey of 75 years from the day we took over our responsibility as an independent nation. In this 75 years, India's growth story has been impressive, from agricultural production to nuclear and space technology, from affordable health care to world-class educational institutions, from Ayurveda to biotechnology, from giant steel plants to becoming an IT power and having the third largest startup ecosystem in the world. We have seen many ups and downs related to our business, economy and industry. We are hopeful we will be able to face the challenges of tomorrow together for a better future of this country. Many questions have been raised recently regarding the growth of the Indian economy, inflation and the introduction of GST. If we shall look at the Indian economy in recent days, I can say we are better than the rest of the world. Our economy has equally suffered like the rest of the world due to COVID-19 and the Ukraine-Russia war. But still our economy has grown well, which is well marked from the statement of former Niti Aayog Vice Chairman Arvind Panagaria recently. He said in a clear tone, Indian economy, which has grown fairly in the last 17 years and will grow at 7 to 8% in the next couple of decades. So despite the impact of the corona pandemic and global conflicts, we are at the right pace of economic growth. The Indian economy has fully recovered to the pre-pandemic real GDP level of 219.20. According to the provisional estimates of GDP released on May 31, 2022, real GDP growth in financial year 21-22 stands at 8.7%, which is 1.5% higher than the real GDP in financial year 19-20. If we shall look at the inflation part, it is really a difficult scenario. We have been suffering to control the inflation of the country. We have been debating over the issues these days, but are not able to bring it to stability. Prices of different commodities are on the rise and consumers are suffering. Retail inflation in India
eased to 7.01% in June from 7.04% in the previous month, but remained out of the tolerance band of RBI. It is great to say certain steps taken by the center and states to reduce the food prices and all, to give solace to the consumers. Still a long way to go to stabilize the inflation, which now needs more brainstorming and more care. Still, we are better in comparison to others as the entire globe is suffering now. If we shall look into the inflation rate of other big countries like the USA, it is much higher. It is above 9% in the USA. The next part of a healthy business environment is the tax system. 5 years ago, we struck a historic deal. From July 2017, a uniform tax on goods and services marketed by Prime Minister Narendra Modi ji as one nation, one tax, one market replaced a bewildering array of local sales and entry levies. Since then, we have been discussing its pros and cons. If we shall look at the collection part of GST, it is doing well. On average, our GST collection is 1.5 lakh crore per month now. The technology has stabilized. Uniform taxation across the country has gone a long way toward making India a common market. Logistics and e-commerce have benefited, but some voices are against as the price of fuels are out of its purview. As a result, high indirect taxes continue to overburden consumers and producers and hurt competitiveness. Also, there are some issues relating to its slabs. Once these issues will be addressed, I think it will have a more positive impact on business and society as well. The three most important things, as I said, growth of the Indian economy, lowering inflation, and a transparent taxation system must be discussed here by our guests and experts, which may help the lawmakers and administrators to build a better business environment. It is also imperative at this stage to mention that in all our endeavors at the corporate and government levels, we must always ensure the work towards improving our basic elements of sustenance, the quality of our soil, air and water, and our environment. These are our responsibility to our generations to come. Also, we shall discuss steps taken by the center and state on ease of doing business and what we need more to make our country and state more investors friendly. India is ranked 63 among 190 economies in the ease of doing business, according to the latest World Bank annual ratings. The rank of India improved to 63 in 2019 from 77 in 2018. So we can say that we are doing better than earlier. If we shall look at the business environment of Odisha, it is doing well. It is among the 6 achiever states as reported by the Centre's Business Reforms Action Plan 2020. Odisha is regularly organizing investors meet to showcase the state's business ecosystem and inviting investors to invest in Odisha. Recently, our Chief Minister, Sri Naveen Patnaik ji, held his overseas investors meeting in Dubai and invited investors from the Middle East. Besides, the state of Odisha has taken various steps in simplifying the process and expediting projects approval. In fact, Odisha was one of the first states in India to constitute a single window clearance system through legislation. This system enables the investor to approach a single designated authority and seek all clearance and approvals to set up and operationalize an industry. Still, we shall have to go a long way and must address the issues faced by the business houses and industries for a business environment. Thank you all.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री सोमरेंद्र मिश्र, Director Ovofarm Private Limited, the largest egg producer of Eastern India. Ovofarm is the most advanced egg production facility in India. They have introduced egg with best before date printed on eggs. अनुरोध करुछि श्री सोमरेंद्र मिश्र को वक्तव्य प्रदान करिबा पई। धन्यवाद। समस्त को शुभ संध्या। सम्मान्य चिरंजीव बाबू, आज सभा मंच रे उपस्थित समस्त अतिथिवृंद, समस्त को आज ये मंचरू मु हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करछि तथा समय को धन्यवाद दौची। आज सभा मंचरू बिजनेस इनसाइट्स उपरे ओडिशा केते बिजनेस फ्रेंडली अच्छी से उपरे मोर मतामत देवा पई मते आज अपॉर्चुनिटी देइथिबारु देखिबा गले तो ओडिया माने आमे वी आर नॉट नोन टू बी बिजनेस पर्सन्स। ओडिया आमे देखी आसचु, पिला बेलु मु देखी आसी बिजनेस माने अण ओडिया। मु जो अंचल रो आसची विशेष करी पश्चिम ओडिसा रो बलांगीर रो पिला बेलु आमे देखी आसचु बेपारी माने हेले गोटे स्पेसिफिक कम्युनिटी रो जो माने ईद मारवाड़ी हेतिबे कि गुजराती हेतिबे कि सिंधी हेतिबे। बहुत कम ओडिया जो माने बिजनेस करने को आसुले कि जो माने भी आसुले से माने बोधे बाध्य बाधकतार बिजनेस करुले जेहेतु से माने अन्य कौनसी चाकरी हो कि प्रोफेशन हो सेठी को पशि पार नथिले। आमे से दिन रु आज पर्यंत बहुत आगु आसचु। अवेयरनेस निश्चित भाव में बढ़ी। बिजनेस प्रोबाब्ली इज नो लॉन्गर अ बैड थिंग, किंतु मते जदि आपण पचारिबे इज ऑफ डूइंग बिजनेस विभिन्न सेक्टर रे विभिन्न स्केल रे अलग अलग भाव रे तार मैनिफेस्ट करुछ। हुए तो आमे जो देखुचु आज अनेक स्टेप्स गवर्नमेंट नहीं गो स्विफ्ट इंट्रोड्यूस करचंती ओडिशा सरकार, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस करचंती, बट दीज आर ऑल फॉर द बिगर इंडस्ट्रीज। बड़ बड़ संस्था माने जो अछंती सेमान को सिंगल विंडो क्लियरेंस रे गोटे थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट उपरे सेटा आपण सिंगल विंडो क्लियरेंस को जाई परिवे। डेफिनेटली से लेवल रे गवर्नमेंट माने रिकॉग्नाइज करचंती द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जोटा कि इकोनॉमी पूर्वरु टोटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऊपर डिपेंडेंट थिला। गवर्नमेंट्स हैव डेफिनेटली रियलाइज्ड जे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट केते जरूरी गोटे अंचल रो अर्थनीति को आकु नेबा पई, लोकों को कर्म नियुक्ति देबा पई, गोटे अंचल रो विकास करिबा पई। गवर्नमेंट मनी इज नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट। जे पर्यंत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न आसी, इकोनॉमिक एक्टिविटी न बढ़ी, अर्थनीति को से बूस्ट मिलिबो नाही, एटा गवर्नमेंट माने रियलाइज करि सारिचंती। अब किछि इनिशिएटिव आरंभ होईची। आज परिस्थिति एमती भी अच्छी जे विभिन्न राज्य दे आर कम्पिटिंग विथ ईच अदर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू देयर स्टेट्स, किंतु अनेक जिनस सेक्टर स्पेसिफिक भी रहुची। जेमती ओडिशा आज दिन रे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वी आर अट्रैक्टिंग इज इन द
माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेस उपरे अच्छी बट गोइंग फॉरवर्ड जदि ओडिशार अर्थनीति को विकास करिवार अच्छी जहाँ आमे देखी आसचु अन्य राज्य रे किंबा मोर सो अन्य देश रे सर्विसेज सेक्टर रे जदि इन्वेस्टमेंट आसुची जदि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस बढ़ुची गोटे राज्य रे गोटे देश रे दैट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जेमती आज जर्मनी को सारा दुनिया देखुची एज अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमिक पावर बट जर्मनी रो इकोनॉमिक बैकबोन हैला तांकर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो माने कॉम्प्लीमेंट करजंती तांकर लार्ज इंडस्ट्रीज को मो मतरे आजिर दिन रे से परिस्थिति सृष्टि है नहीं जो थे कि स्मॉल मीडियम बिजनेसेस थ्राइव करि पारिबे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर जड़े किसी रिटेल बिजनेस टे करुची रिटेल शॉप टे करुची ताकू जेते लाइसेंसिंग जेते प्रोसीजर भितर जीवाकू पड़ुची हुए तो जड़े मैन्युफैक्चरिंग को जाउची ताकू से जगह रे दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट मोर गवर्नमेंट प्रोसीजर्स गवर्नमेंट लाइसेंसिंग गवर्नमेंट परमिशंस एंड इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सो आमे देखिबा जे आमर लोकंकर इच्छा शक्ति रे देयर एफर्ट रे सेमानकर परिश्रम रे बहुत ओडिया बिजनेस आज थ्राइव करचंती इवन ओडिया बिजनेस पर्सन्स आर मेकिंग अ नेम बट मेनी ऑफ दोज बिग नेम्स दैट वी हियर से माने ओडिसा रे करू नाहंती ऑपरेशन जेमती ओयो रूम्स रो फाउंडर ओडिसा रो ऑरिजिन बट they have established they have set up their business elsewhere odisha ru unicorn odia loko are co-founders in different unicorns but the operations are not there in odisha eke to odisha as such is not a big market however se jo gote छोटो संस्था को बड़ हेबा पई जो भित्तिभूमि दरकार से आहरी अनेक आवश्यक अच्छी आ मो मतरे केवल गोटे राज्य यहाँ करिपारिबो नाही दिस हैज टू बी अ जॉइंट एफर्ट बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस इट इज जदि गोटे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस अच्छी से केंद्र सरकार रो बहुत बड़ रोल अच्छी जेमती गोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जदि एक्सपोर्ट होची गोटे सेंट्रल एजेंसी अच्छी अपेडा अच्छी से माने केते फैसिलिटेट करूचंती से माने केते सहयोग करूचंती एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल अच्छी तो जहाँ भी बिजनेस एनवायरनमेंट जदि आमे गोटे ग्लोबल स्केल रे देखुचु निश्चित भाव में से राज्य सांगरे केंद्र सरकार कर मिलित उद्यम दरकार जहाँ द्वारा गोटे फेवरेबल बिजनेस एटमॉस्फियर हो पारिबो जहाँ वो आज टिके शिफ्ट हो जाइए वर्ल्ड बैंक ग्रुप जहाँ आगु कहते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से माने एबे कहउचंती बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो गोटे व्यवस्था बिजनेसेस को एनेबल करिवो एम्पावर करिवो टू ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज से व्यवस्था आम जब ग्लोबल स्केल रे देखिबा वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो से आमर लोकंकर मनोभाव रे परिवर्तन दरकार वे तो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी निश्चित भाव से अंडरस्टैंडिंग आसी जाइए किंतु आमे देखुचु लो डाउन द ऑर्डर इट हैज नॉट पर्कुलेटेड वेल आज भी बिजनेसेस को बहुत हर्डल्स बहुत हेडविंड सामना करने को पड़ुची जो थे कि बिजनेसेस जो स्केल रे ग्रो करने कथा से स्केल रे ग्रो करि पार नाहंती आउ एते कॉम्पिटिटिव अछि आजिर दिन रे ग्लोबल इकोनॉमी आफ्टर गेटिंग बेटर्ड बाय कोविड हो कि एबे जो वार सिचुएशन हेची सेटा हो इट इज गोइंग टू बी इवन मोर कॉम्पिटिटिव सो गवर्नमेंट सरकार मान को आकु आसीबा को पड़िबो आहुरी सहायतार हाथ बढ़ाइबा को पड़िबो बिजनेसेस को बढ़ाइबा पई जहाँ किछि आमे पदक्षेप नेइचु सेटा को आहुरी एक्सिलरेट करिवार अछि जदि
सहयोग मिले निश्चित भावे मु भावुची ओडिशा रे भी व्यवसाय बढ़िबो, ओडिशा रे भी बिजनेस थ्राइव करिबो, नेशनल लेवल रे ग्लोबल लेवल रे ओडिया बिजनेसेस भी ना करि परिबे। एतिकी कही पुणी थरे समय को धन्यवाद देकरी मोर वक्तव्य शेष करुची। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान संबर्धनार पर्व वरेण्य अतिथि माननकु मंचरे संबर्धित करिबा पई चेयरमैन समय श्री चिरंजीव विश्वाल को मो विनम्र अनुरोध करुची। श्री राजीव शेखर साहू मंचरे आमर वरेण्य अतिथि माननकु संबर्धित करा जिवो। आम गहन आमर वरेण्य अतिथि माने मंचासीन होती तेणु जोरदार करताली सहित तांकु निश्चित भाव में आम धन्यवाद ज्ञापन करवा। आज संध्यार आम सहित उपस्थित रही से माने वक्तव्य प्रदान करथिबारु श्री सौमित्र पट्टनायक इंजीनियर ब्रह्मानंद मेहर श्रीमती सुकीर्ति पट्टनायक श्री किशोर मोहन महांती श्री समरेंद्र मिश्र बहुमूल्य समय दे आमर वरेण्य अतिथि माने आज आलोचना चक्र रे आम सहित भाग नहीं से आम तरफ समय परिवार तरफ अशेष अशेष धन्यवाद एवं आज आलोचना चक्र को पुणी थे चलतु आगे नवा। श्री किशोर मोहन महांती हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स इम्फा। Besides his present responsibility, he is also associated with industrial associations like Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and Utkal Chambers of Commerce and Industry. Sri Mohanty holds a bachelor degree in mechanical engineering from Hyderabad. पिलादिने क्रीड़ा एवं अभिनय रे अनेक पुरस्कार लाभ करथिबा श्री महांती आमर परवर्ती वक्ता। आसंतु करताली सहित तांकु स्वागत करिबा। A very good evening to this august
gathering assembled here. Honorable Chief Guest, Shri Rajiv Shekhar Sahu, and other distinguished guests on the dais, and ladies and gentlemen of the dais. It's a privilege for me to be here, and among all these distinguished guests, I feel it's a privilege for me, and I'm thankful to the Samaya for inviting me to this occasion. So this topic about ease of doing business, particularly in the context of Odisha, I would say that we have achieved in terms of investments or on the perspective of industry point of view, I would say that we have achieved a lot. On investment, we have achieved a lot. I think though in the previous 2 years it was challenging for all of us which has second the economy of the state as well as the whole country and even the world. But despite of all this, I think some reforms, initiatives taken at the level of Government of India and maybe in the state level under the visionary leadership of the Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. So Odisha has been able to outperform many other bigger states in the country. So I would say basically in these reforms and all, after taking up all these reforms and all that, so Odisha basically achieved a lot in terms of investment as well as, so we found a substantial development in 22-23, that is gross state domestic product of Odisha is projected now is of 7.2 lakhs crore, a phenomenal growth. 12.6% of increase compared to last year. So this shows that we have achieved because of some ease of doing business category, some reforms and whatever initiatives taken by the government. These are the results we are finding that Odisha has improved a lot. So also per capita income, I would say it has reached 1.27 lakhs in the year 21-22 as compared to 48,500 in the year 2011-12. So now in the current scenario, India holds its growth to be one of the few bright spots in the world economy. Then there is a contribution of Odisha state also. So this incredible revival of economical activities in this state has been possible due to resilience of economy and steps taken by the government at particularly micro and macro level. So years and years, Odisha has been consistent in setting benchmarks in terms of ease of doing business and facilitating entrepreneurs to optimize use of local resources. And I would say that Odisha is one of the 7 states among top achievers in ease of doing business, ranking and reforms now. And we are still to improve in these rankings. Even though our state is a natural resource driven, but the state has been able to lay down a strategy to take forward Odisha to more diversified economy, and today it's visible that Odisha has made strong presence in sports, healthcare, education, startup contribution and skill development
and seafood exports, etc. So all of this possible due to the aggressive approach of the state government forming government sector specific policies, which is the part of, I would say, this ease of doing business, the policy formation and various efforts like some with regards to ease of doing business has been taken in order to facilitate investment in the state. Even some conclave, arrangements of conclave, like recently Dubai Business Summit, and in November I think Make in Odisha conclave is going to be there. So all these approach are basically towards ease of doing business to attract the investment, and the investment has come for that aggressive approach and ease of doing business policies. So basically I would say state is gradually becoming the industrial hub of the eastern region in the country near future, and in my opinion industry and service sector, these two sectors are going to be the lead sector and the lead driver for the growth of Odisha. So I have this opportunity to reiterate that thanks to the government for their towards ease of doing business, for their approach towards ease of doing business. And lastly, as one of the largest and oldest homegrown company, we at INFA strongly believe that this is just the beginning of an Odisha shining story, and the days ahead state economy will touch newer heights. Thank you, and Bande Utkal Janani. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिसेस सुकीर्ति पटनायक, को चेयरपर्सन इनवेक नेशनल एंड कन्वेनर इनवेक ओडिशा, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडल्ज। इनवेक द्वारा निकटरे जनता मैदान में आयोजित होता भारतर प्रथम वुमेन्स बिजनेस मेला, जो थे कि 150 रु अधिक संख्यक महिला शिल्पोद्योगी भाग नहीं। निश्चित भाव में महिला मानक पई एवं ओडिशा पई मध्य गर्व और गौरवर विषय। तेणु ए श्रेय जाए मिसेस सुकीर्ति पटनायक को। अनुरोध करुछि मैडम को तांकर वक्तव्य प्रदान करबा पई। Honorable Chief Guest, my absolute favorite, Mr. Rajiv Sahu, Sir, dignitaries on and off the dais, my dear lovely friends, especially so many women in the audience, बहुत खुशी लागु चेते महिला मान को देखी गिरी, and आजी समस्तों को शुभ संध्या, अपन समस्तों को मो नमस्कार. Thank you. I'm the only woman, mo jane hi mahila ache je dais re, and I'm representing the women entrepreneurs of Odisha. बहुत गर्वित लगुची ए आज कहिया पई कि 3 वर्ष पूर्वरु आमे आरंभ करथिलु गोटे सिंपल आइडिया कि केमिति महिला उद्योगी माने ऊपर को उठिबे. आज बिजनेस कॉन्क्लेव होची टू डिस्कस अबाउट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ओडिशा. 3 वर्ष पूर्वरु आमे 4 जण गोटे रूम भितर डिस्कस करिथिलु. आम चेयरमैन जे अछंती श्री जेबी पाणी सर, सी हमको एनकरेज करथिले कि आपण देखंतु कि भली भाबरे जो वुमेन टैलेंट अच्छी आम स्टेट रे, कहीं सबू वुमेन कर किसी ना किसी टैलेंट अच्छी और से माने किसी निजे गोड़े ठिया होगा चाहूँगी, कौन करने चाहूँगी. आम चाहूलु कि एमती महिला उद्योग को नहीं करी जो मैंने निजे डिसीजन मेकर्स आम गोटे ग्रुप क्रिएट करूँ. तो आईसीसी जोटा इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आमको से प्लेटफॉर्म देइथिला. और 3 वर्ष पूर्व जस्ट बिफोर कोविड आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक ताको उद्घाटन करथिले. 4 जनक ठारू आरंभ होइथिला. आज आमे ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स अच्छू 3 वर्ष परे. एंड आई थिंक एटा इंडिया रे फर्स्ट टाइम हेइची. होल इंडिया रे गोटे बॉडी एमती क्रिएट हेइची. आपण देखिथिबे यूजुअली बहुत बड़ बड़ ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस
ओडिशा बाहरी क्रिएट हुए तापर ओडिशा रे तार गोटे चैप्टर क्रिएट हुए मु बहुत गर्व सहित कहबी कि एई चैप्टर रे ओडिशा रे प्रथम क्रिएट हला आ तापरे तार सक्सेस को देखिकरी आईसीसी एबे पूरा इंडिया रे नेशनल चैप्टर लॉन्च करिछि सो दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ओडिशा एंड आई फील extremely privileged not only for the government of Odisha for giving such good support for providing such a safe place for the women of Odisha to work. You know, we are very privileged. I mean, nari mane bahut privileged ki am janmo aji Odisha re heichi. The kind of safety that we see in Odisha, upon jodi compare karibe to other states of India, I think we are way ahead, and I feel very privileged ki mu aji Odisha mati re janmo neichi. तो आमे आज बिजनेस विषय डिस्कस करूचु तो एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर डिस्कस करूचु बहु जन पचारती एंटरप्रेन्योरशिप माने कौन आमे जानिचु बिजनेस कौन एंटरप्रेन्योरशिप माने कौन सो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग वेयर द बिजनेसमैन इज एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम राइट तो आपन को जदी कोठी गोटे प्रॉब्लम देखा जाउची देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी टू डू बिजनेस तो सेही भलिया मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को नहीं करी एबे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रचेष्टा चलैछि कि आम भलिया उद्योगी माने महिला उद्योगी माने आहुरी ऊपर को उठंतु तो मु तो कहे कि आई थिंक एवरी मदर जे गोटे छुआ को पाली की बड़ करि पारे शी इज अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर राइट सो जमती गोटे बिजनेस को आम छोट छुआ भाया बढ़ई पारू से भाया गोटे माँ जदि तार छुआ को बढ़ई पारे तो सबू माँ सबू भौणी सबू गर्ल भितर गोटे एंटरप्रेन्योर अच्छी गोटे उद्योगी अच्छी एंड वी शुड नर्चर दैट एग्जाम्पल देवी किछिटा आमर INWEC रे जो महिला उद्योगी अच्छंती तांको ना सहित आम सहित जड़े उद्योगी अच्छंती तांको ना हैला साई कृष्ण महांती आमर जो मंदिर रे जो फूल बाहरे जोड़ा फोपड़ा हो जाए से फूल को नहीं कि नेचुरल इनसेंस स्टिक्स जो धूपकाठी तैयारी हुए से सेटा को तैयारी करूचंती आउ जड़े महिला उद्योगी अच्छंती आम सहित तांको ना हैला मिस स्वस्ति मिश्रा सीए आम जो फार्मर्स अच्छंती जो माने राइस मेकिंग करूचंती से डायरेक्टली फार्म रू आनिकी आमर अर्बन एरियाज रे डायरेक्ट कनेक्ट फार्म टू टेबल जहाँ को कहा जाए से चाउल से डाली से ग्रेन्स को आनिकी पहुँचाऊँच आउ जड़े वुमेन एंटरप्रेन्योर अच्छंती तांको ना हैला सोनिका सी ओडिशार जो पट्टचित्र अच्छी जो पॉपुलर आमर हैंडलूम उपरे तैयारी हुए सेटा को से दुबई कुवैत इज्राएल USA UK पूरा होल इंडिया रे पूरा होल वर्ल्ड रे ताकू सी ऑनलाइन बिक्री करूचंती आम वीवर्स मान को से सपोर्ट करूचंती एंड आम पट्टचित्र को से पॉपुलर करूचंती आउ जड़े महिला उद्योगी अच्छंती तांको ना हैला सोनी सामल आमर जो सोशल मीडिया डिजिटल लाइफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ हो गलानी से बेस करिकी से तांको सोशल मीडिया एंड डिजिटल कंपनी खोली जहाँ माध्यम रे से बहुत बिजनेसेस को एबे सक्सेसफुल करने को हेल्प करुचंती लास्टली कहबी मिस राधा अग्रवाल जी सबू डॉक्टर्स को गोटे ऐप थ्रू रे जिते आपण छुआ पिला देह भल नहीं कहार भी देह भल नहीं से को नहीं कि घरे डॉक्टर्स करो माने कंसल्टेशन करिवारे हेल्प करूछंती सो आपण देखुथिबे आमे महिला उद्योगी माने आज एई जाई पहुँचलुणी आ एई जिनसटा ओडिसा रो आरंभ होईछि तो मु भाबुची कि आमे एबे राइट डायरेक्शन रे अछु बहुत भलो आमर गोटे प्लेटफॉर्म हमको मिली आमे ताकू माने वी आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी गुड टाइम वेयर नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ एड एंड हेल्प फॉर अस टू ग्रो बिजनेस मेला विषय में मैडम कहले ता विषय भी दीपद कहबी आमे जब आरंभ करूँ बिजनेस मेलार जो कॉन्सेप्टा भाभी कि गोटे उद्योगी को स्पेशली गोटे महिला उद्योगी को कहीं महिला उद्योगी मैंने आग को आसी पारु नाहंती तांकर मेन प्रॉब्लम थिला तांका पाखे कॉन्फिडेंस नथिला मु कोन करि परिबी मो पाखरे मु एकला केमती करबी मु केमिति लोक केमिति जानिबे लोक मोर प्रोडक्ट केमिति जानिबे तो आमे कहिलु नाही गोटे एमिति मेला करिबा जोठी खाली महिला उद्योगी माने से माने तांकर स्टॉल्स रखिबे तांकर प्रोडक्ट्स तांकर सर्विसेज तांकर सॉल्यूशंस को से माने प्रमोट करिवे आ तांको कॉन्फिडेंस देवा पई आमे एंटायर इंडिया रो बहुत बड़ बड़ डिग्निटरीज को इनवाइट करिथिलु आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक ताको इनागुरेट करथिले
आम सहित डॉक्टर राजीव साहू भी थिले आम सहित जड़ित होते एंड बॉलीवुड स्टार अर्जुन रामपाल लारा दत्ता इम्तियाज अली से माने मध्य आसथिले फर्स्ट टाइम इन ओडिशा तो आपण विश्वास करेनि 150 रु अधिक महिला उद्योगी खाली अर्बन नुह कोरापुट मालकानगिरी ढेंकानाल ट्राइबल्स एसएचजी ग्रुप समस्त आम सहित गोटे प्लाटफॉर्म रे थिले आ डाली चाउल आरंभ करी इवन रियल एस्टेट पर्यंत गोटे गोटे फ्लैट बिका होती 50 लाख टंकार सो टुगेदर वी डिड अ बिजनेस ऑफ 4.5 crores in just 5 days and that was achieved by all the women entrepreneurs of Odisha. So I think this is where we are heading to and that was a direct sale. Indirect sale within a year we are expecting more than 12.5 crores. So आमर गोटे बहुत ही सिंपल मंत्र रही वोकल फॉर लोकल आमे ओनली लोकल एंटरप्रेन्योर्स लोकल प्लेयर्स को सेठी जगह देथिलु सो दैट वी वांट टू आमर माटीर जो मैंने अच्छा आम तांको ऊपर को उठा को सब चेष्टा करिथाउ आमर आगो को बहुत फ्यूचर प्लान्स रही आमे खाली भुवनेश्वर कटक पुरी नुह बालेश्वर राउरकेला बरहमपुर कोरापुट रे 4टा क्लस्टर्स भी एबे खोलिबु empowering more and more women entrepreneurs and आशा करुच्ची कि जो माने देखुचंती मीडिया माध्यम रे तांको निज घरे जति माँ भाई माँ भौणी आ बहु अच्छंती सेमान को स्त्री अच्छंती तांको इनकरेज करिवे कि सेमाने निश्चय निज टैलेंट को एंटरप्रेन्योर्स भाबरे परिणत करिवे लास्टली थैंक यू जणेबी आमर गवर्नमेंट को बोथ नेशनल एंड स्टेट आपण जानी नथिबे एमती बहुत गुडे स्कीम अच्छी आमर जो बिजनेस मेला हेइथिला एंटायर स्टॉल चार्जेस वर कंप्लीटली रिएम्बर्स्ड by the MSME government of India. Almost 50 lakh rupees has been sanctioned. गोटे पैसा आम उद्योगी माने खर्च करना तांको पूरा रिफंड मिल जाइथिला. So MSME रो बहुत एमती अच्छी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप ओडिशा हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज दउची फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स स्किल इंडिया स्किल ओडिशा वी आर वेरी प्राउड कि एथरा जो स्किल कंपटीशन हेइतला ऑल इंडिया लेवल रे ओडिशा बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स सो आम स्किल करूचु आमर जो यंगस्टर्स अच्छी चाकरी दौचु एंटरप्रेन्योर्स भाव में भी आम चेष्टा करूचु गोड़े ठिया होगापी आमर बहुत गुटे बैंक लोन्स रही आमर सबुठु पॉपुलर आम मिशन शक्ति जोटा इंडिया रे कोठी भी नाही जो 7 लाख रु अधिक वुमेन मानू एम्पावर करी सो एमती आम देखा बिजनेस मेला रे भी 60 रु अधिक प्राइवेट कंपनीज तांको CSR फंड थ्रू रे आमको हेल्प प्रोवाइड करछंती स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करछंती सो आई थिंक ओडिशा इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बिगिन विथ एंड ऑल ऑफ अस शुड गेट टुगेदर टू मेक इट इवन मोर सस्टेनेबल एंड अ मच बेटर ब्राइटर फ्यूचर फॉर एवरीबडी जीवा आगु गोटे कथा कहबी गोटे एंटरप्रेन्योर को गोटे इकोसिस्टम दरकार आमे चाहूचु कि आमे हमरो बिजनेस उपरे फोकस करिवु फाइनेंशियल प्लानिंग मार्केटिंग सेल्स HR जो सब थाए different aspects of a business. I think that ecosystem needs to be created and that's where I would request all the corporates here, the government and even the bureaucrats to come together and make that ecosystem more viable. Thank you so much for giving me the time and take care. Bande Utkala Janani, Jai Jagannath. Thank you. आपणकर प्रेरणापूर्ण वक्तव्य पाई बहुत बहुत धन्यवाद मैडम श्री ब्रह्मानंद मेहर MD अरुंधति ग्रुप द लार्जेस्ट ज्वेलरी ब्रांड्स ऑफ ओडिशा architect and designed in the year 2000 by a technocrat Mr. Brahmananda Meher. With the leadership of Shri Meher, Arundhati Group has joined Hero MotoCorp family in 2006 with 3 ultra-modern showrooms in Balangir, Bhavanipatna and Bhubaneswar. अनुरोध करुच्ची तांको वक्तव्य प्रदान करिबा पई. Thank you, ma'am. So, honorable guest of the evening,
eminent and senior chartered accountant Rajiv Sahuji, Honorable Chairman Samaya Group, Chiranjeev Biswalji, and all our distinguished speaker of the evening, our esteemed guest of the evening, Namaskar, including print and electronics media, Namaskar to one and all, Jai Jagannath. Today afternoon, I was traveling with my wife from Mumbai, and I was wandering in the airport and saying that today late evening I am going to join a conclave organized by Samaya Group. कथा प्रसंग रे मुता कहली इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे आज गोटे कनक्लेव अच्छी मते जॉइन करिवार अच्छी एंड मो नॉलेज रे थिला कि इंडिया 63 रैंक रे आइछि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे ओडिशा में नंबर 7 रे अछु जदियो अचीवर्स ग्रुप रे अछु वी आर ट्राइंग टू अचीव द टॉप अचीवर्स रैंक पर कैपिटा इनकम एठी बढ़ी छि resources, we have lot of natural resources, so we are doing good in ease of doing business. से मते कथा प्रसंग रे कहले ताले तमे 6टा रु राति 12टा जाय कोन पई मेहनत करूछ जदि एते सरल हे गलानी एते सुविधा हे गलानी सब जिंस सो इन ए लाइटर मोड मु आकु नेलनी कथा को I was as well born in Balangir district, which was considered one of the most backward district in 70s. KBK form ହେଇଥିଲା late Rajiv ji ko period रे to boost the economy and resources of that particular belt Kalahandi Balangir Korakput को नहीं के मु जो गाँव रे जन्म ग्रहण करथिली तार पॉपुलेशन थिला 700 आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीई मैकेनिकल मो घरे प्रपोजल देइथिली कि आई एम प्लानिंग टू एंटर इनटू ए ज्वेलरी बिजनेस बाबा पचारिथिले कौन पाई बलांगीर रे जेमती मो पूर्वरो आमर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर जी मो होम डिस्ट्रिक्ट टू आइथिले से कहूतिले बलांगीर रे ओडिया पुओ व्यवसाय क्षेत्र को आसीबा क्वचित थिला बट 2000 रे जतले आमे आरंभ कलु प्रोबेबली सही समय रे ओडिसा रे बीजेडी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता एंड यही 22 वर्ष भितरे वी हैव एक्सपीरियंस मेनी रिफॉर्म्स एटा सेंट्रल गवर्नमेंट रे भी स्टेबल गवर्नमेंट लास्ट दीटा टर्म है 22 वर्ष है आम गोटे स्टेबल गवर्नमेंट रे अच्छे सो कंटिन्यूअसली ये गोटे इम्प्रूवमेंट रो प्रैक्टिस चलती बट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रो संज्ञा मुझे एनालाइज करूली कि जिते आम गोटे परिकल्पना करूँ कौन भी व्यवसाय आरंभ करने आउ एग्जीक्यूशन जाए देयर आर डिफरेंट सेगमेंट मत लगे टू आइडेंटिफाई द बिजनेस यही जिनस ओडिशा रे इंडिया रे बिजनेस आइडिया रे रिसोर्सेस रे कमी ना नेक्स्ट स्टेप जिते बेले आम आसचे टू आइडेंटिफाई द लोकेशन आम कौ जगार करवा आमको केमती जगह मिलिबो सुविधा रे से जगार मे भी बोधे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हवा आरंभ हो जाए नेक्स्ट लेवल को आम जिते बेले आसचु हाउ टू फाइंड द इजी फिनान्स कौन भी बिजनेस पाई प्राथमिकता सब बेले रुहे फिनान्स रो फिनान्स पार्ट को जिते बेले आसचु हुए तो गोटे एंटरप्रेन्योरशिप रो आइडिया नहीं कि आइस्तिबा गोटे युवक से ही दीटा लेवल को जदि अतिक्रम करी जाउची to locate to find out a good location and to find out a easy finance or probably what he required सही finance पाइबा पाई थर्ड स्टेज आसला बेल को आमको ऑपरेशनल एंड जो रेगुलेटरी पार्ट अच्छी यही परमिशन आमको दरकार यही कंप्लायंसेस दरकार दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल आई हैव एवर बीन एक्सपीरियंस विथ सो मेनी फ्रेंड्स मोर जो माने बहुत क्लोजली काम कर एंटरप्रेन्योरशिप हवा पाई सबु समय यही जिनस स्ट्रगल करने को पड़ुची नेक्स्ट गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट करवा कौन भी प्रोडक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्ट से प्रोडक्टर गोटे मार्केट तैयारी करवा यहीटा आज भी आम मानक चैलेंजेस अच्छी डेफिनेटली किछि वर्ष पूर्व ओडिशा कृषि भित्तिक राज्य थिला आज आम शिल्प भित्तिक राज्यर मान्यता पाई सारीचे बट इज दिस टू फैक्टर्स आर सफिशिएंट
मत लगुच जो जाए आम शिल्प किंबा बृहत शिल्पर कथा जिते होउछे ताठू आम जदि ट्रांसफॉर्मेशन होने कुटीर शिल्प आड़कू इंडिया इज सच ए लार्ज पॉपुलेशन कंट्री एटी जो जाए लोकंक हाथ रे कुटीर शिल्पर व्यवसाय आसने लोक रिफॉर्मेशन ता देहरे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हुंतु स्टेट गवर्नमेंट हुंतु ता संगे मु आ गोटे बॉडीज यही दुईटा गवर्नमेंट जहाँ भी रेगुलेटरीज आसची कंप्लायंसेस आसची सिंप्लिफिकेशन आसची आमे देखुचु कंटिन्यूअसली दे आर एनकरेजिंग चाहे जीएसटी हो जाओ जीएसटी 2017 रे आरंभ हैला आज आमे प्रोबेबली वी आर इन 6th ईयर आमर जे चीफ स्पीकर अच्छा या ऊपर बहुत बेटर कही पारिबे बट आई फाउंड कि ईयू भलिया डेवलप कंट्री रे भी एटा 10 वर्ष लगी स्टेबलाइज हेबा पाई एंड इट्स ए एवरीडे प्रैक्टिसेस हुए तो जो मैंने आज ये जदि यही मंच आम सांगे रंजीव विश्वाल जी थांते ताहले मु आ गोटे एग्जांपल दे थांते कि हाउ डू यू अलर्ट ड्यूरिंग योर जितेबाला आपन बैटिंग करुचंती प्रत्येक बॉल को आपन केमती अलर्ट रुहंती एवरी बॉल काउंट्स सो फॉर ए एंटरप्रेन्योरशिप एवरी डे एवरी मिनिट काउंट्स ता सांगरे आपन जितेबाला बॉलिंग करुचंती से बॉलिंग रो लक्ष्यटा भी सेते सठिक हवा दरकार आपणकर पेस हो आपणकर पिच हिसाब रे बाउंसिंग हो आपणकर स्पीड हो सो एटा गोटे डेली प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस रे इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस दरकार विथ सेंट्रल गवर्नमेंट हो जातु किंबा स्टेट गवर्नमेंट हुंतु ता संगे लोकल बॉडीज मते लगे आमे जो बहुत बेसी इंडिया रे हो ओडिशा रे हो लेकिंग करूचे लोकल बॉडीज रे जोठी एग्जीक्यूशन लेवल रे बहुत बेसी प्रॉब्लम अच्छी बहुत बेसी कंप्लायंसेस अच्छी ताकू आगामी दिन रे रिफॉर्म करबा दरकार मु वेस्टर्न ओडिशा रु आछि वेस्टर्न ओडिशा रे आपण माने समस्ते जानिथिबे आज 80% वुमेन पार्लियामेंटेरियन बोधे संबलपुरी पाट पिंधंती किंतु तार जो R&D पाई प्रोत्साहन पाई आउ ताकू गोटे मार्केट जोगै देबा पाई सही लेवल रे हुए तो आज जाए उद्यम है आगामी दिन रे अरुंधति नेक्स्ट ईयर रे बहुत बड़ा गोटे R&D सेटअप करिया पाई जाउची सोनपुर ठारे जो थिरे लोकं को ट्रेनिंग दिया जीवो तालीम दिया जीवो केमती टाई एंड डाई करा जाउची बाहरु निफ्ट रु स्टूडेंट आसीबे डिजाइनिंग ऊपर केमती बेटर डिजाइन जो डिजाइन रो एक्सेप्टेंस आजी रो चाहिदा को देखिकी करा जाई पारिबो या ऊपर आमे कंटिन्यूअसली लास्ट 2 इयर्स काम करूँ सो ये जो छोटा कहली कि बिजनेस आइडिया ठू नहीं कि बिजनेस एग्जीक्यूशन जाए आ लार्ज स्केल इंडस्ट्री टू नहीं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ता संगे कॉटेज इंडस्ट्री यही सबूर तालमेल पाई वी नीड कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हुंतु स्टेट गवर्नमेंट हुंतु कि लोकल अथॉरिटी की जो माने आमे समाज रे जिनस को बुझीबार शक्ति अच्छी बुझे पारिबार शक्ति अच्छी से जिनस डाउन द लाइन जो यंग जेनेरेशन आसुँच जो माने बिकॉज आज फिगर टिप रे पूरा वर्ल्ड अच्छी वर्ल्ड इज सो स्मॉल देखिए जदि आपण माने पूरा दुनिया गोटे मोबाइल भितर संकुचित होकर रही जाइए सो कौन सी इनफॉरमेशन दरकार हेले काहाकू असुविधा होने बट यस वी नीड द एनकरेजमेंट इन ग्राउंड लेवल एंटरप्रेन्योरशिप को जदि थरे आमे कुटीर शिल्प को डेवलप करि पारले एमएसएमई को डेवलप करि पारले ताहले स्टेट आ राज्य जो आमे 63 रैंक रे अच्छे 50 रो ड्रीम को देखुचंदे हमर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी कि आम स्टेट जो आमे देखुचे टॉप अचीवर्स भितर आसीबा व्हाई नॉट वी विल डू बेटर देन आंध्रा व्हाई वी आर नॉट डूइंग बेटर देन कर्नाटका सही स्वप्नटा भी आमर साकार हो पारिबो So thank you for giving me this opportunity and make me feel privileged. Thanks to all team Samaya from bottom core of my heart. Jai Jagannath. Bande Utkal Janne. बहुत बहुत धन्यवाद श्री सौमित्र पट्टनायक Head Corporate Communications Odisha, ArcelorMittal Nippon Steel India. He is an
advertising, PR and corporate communication professional with nearly 3 decades in the domain. As a head of corporate communications with ArcelorMittal Nippon Steel India, he is responsible to carve out the branding and communication strategy and reinforce the corporate trend in its due perspective. अनुरोध करुछि वक्तव्य प्रदान करिबा पई श्री सौमित्र पट्टनायक. Thank you. Good evening, everybody, ladies, gentlemen. Respected Sri Chiranjeev Biswalji, Mr. Shahu, distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen, my dear friend, I would say, Mr. Sajjodji, good evening once again. It's a privilege to have been invited on this platform to address this very relevant and topical topic and timely topic, I would say, ease of doing business, especially in Odisha. ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ହେଇଯାଇଛି ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ it has been highly impressive and it's a real honor to come and stand today here on the dais and be part of the deliberations. So thank you Mr. Biswal, thank you Samay Group, Ashirwad Publications, all of you, thank you so much. Why I say that it is a very timely topic, and a couple of days back, or I think this was 31st July or something, DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce, Government of India, तांकर जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 रो समान करी थिले तार गोटे असेसमेंट रिपोर्ट सम दे के ब्रॉट इट आउट. सो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्रेजेंटेड इट, जो थे कि ओडिशा को समान कहते जे अचीवर्स कैटेगरी रे ओडिशा हैज बीन ये एडजस्ट. सो देयर इज द सुपर अचीवर कैटेगरी. बहुत वक्ता आगुर कही सारे जे Andhra is the number 1 in this category, and there are several, I think 6 other in the super achiever category. So achiever category, Odisha is there. It has been a quantum jump. So 2020 assessment Purbaru, this was in 2019. Odisha was at 29th. So from 29th, you come into the achievers category. So this is a very great honor for the state, for all of us who are also into the business. At the outset, I would like to say, this seems to be a number, this seems to be a relative ranking. Sometimes it's very exciting when you have been adjudged as within the achievers category, and sometimes not very exciting when just tar gote barsha purbaru you were adjudged at rank number 29th. So just to give a brief history of this technical part of ease of doing business in India for the various states, this started in 2015. 2015 ଯେତେବେଳେ assessment ଆରମ୍ଭ ହେଲା, Odisha the first year we were at rank number 7. The next year we went to 11. Tapar I think 14 or 17, then 29, and now within again in a year's time we are back. So just କହିବାକୁ ଚାହିଁ, the technical part of ease of doing business for any of the states, I think it is more to do with that particular year's assessment. It's not a very long term. It is like এই পরীক্ষারে আপন কোন কলে and সেই তার রিজাল্ট কোন আসছে, that is not going to judge what you are as a student or as a professional or as a person. So this has to be a long term approach and a long term perspective ନବାକୁ ପଡ଼ିବ to judge anybody.
Now coming back, a couple of things. When the topic is of doing business, that too in Odisha, I think there are various components. First is we need to define what do we mean by business, because when we talk of ease of doing business, generally we think of ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆଗରୁ ବକ୍ତା କହିଗଲେ, usually ଆମେ ଭାବୁ that it has to do with the mega or large industries, and especially the large manufacturing industries ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ଦରକାର, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପାଣି ଦରକାର to set up the industry, so all these things. So to me, business is much beyond that. I think ବହୁତ ଜଣ ବି ଯେମିତି କହିଲେ, it is not just the mega or the large corporates or the large industrial or large manufacturing houses. It has to do with the MSME sectors. And if we look at the China model, ଯେମିତି କହିଗଲେ ବକ୍ତା ଯେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, so including that also, so we need to see the whole spectrum of who all are part of this term called business. And when it comes to Odisha, we need to see that what has been the core strength and the background of Odisha, the people of Odisha, the business background in the state, and where we are today. Usually, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦେଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉ, like World Bank has been adjudging the various countries for ease of doing business. I think 2014 India's rank worldwide was 142, and 2022 it has come up to I think 63. So that has been the jump in all these years for India. Usually amane koche ease of doing business jodi achi gote country re, all the investors, world global investors will come to that country. If the ease of doing business is very good in some particular state, the national and the international investors will also come to that state. Now coming from a business and a corporate background, and most big industrial houses are also here, you see business decisions are much more complex and much beyond this just a technical part of ease of doing business in a particular location. It has a lot to do with entrepreneurship. You need to do a whole lot of 360 degrees mapping, identify a gap of what is there, identify your core competency, move on kariparibi as an individual as an entrepreneur. Finance kon achi mate kotu kon mili paribo. What are my requirements for my product or my services? Raw material apankara linkage darkar. You need to have access to your market. You need to have the logistics have to be in place, and just khali raw material in and finished product out nuha. If you are going to have business partners and everybody, how they are going to come to you and also they go back. So they will look at a whole other infrastructure also. It is not just that your business is operating in isolation. Rules and regulations obviously is a very big and important part, both from the central government and also the local state government, including the local whatever rules and regulations are there. Environment, climate change, these are very hot topics, and it's already arrived. So, and the last but not the least is the social license to operate, which is the community. The people, you cannot operate in isolation. कि मु एठी गोटे कंपनी कर देली कि मु ए जगह गोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर देली, गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड मी, लेट मी गो अहेड. नो, you have to take all the people along with you, the community, the immediate community, the people of your district, the people of your state, and also the people of your country. So this is a very complex drivers for taking a business decision, more than just a ease of doing business ranking. Now coming to, you see these days it is one single global village, we can say. Everybody, it has already been said, one of the speakers, everything, the entire world is within that one small instrument which is in our hands, mobile bhitar achi. The world dynamics jaha hochi, that is affecting your national in no time. That is affecting your state decisions in no time, and your individuals.
if there is a economic downturn, US is facing, the Europe is facing, the other countries are facing, immediately, and because of also the inclusion of the free trade agreement and the constraints to that, international trade, immediate there is within no time you will have the impact and repercussions on your business, even at a local level, whether you are at a district level at say Jagatsinghpur or say Sambalpur, or even to a subdivision level, because you are not operating in isolation. So it is a very highly complicated thing. Second is, as I said, that the World Bank is judging the countries, various nations, on ease of doing business. The countries are also doing a lot of activities as far as creating an enabling environment for the businesses to come up, to thrive, and also to sustain. Now, coming to Odisha's context, I think as far as the single window, the Go Swift is concerned, I think the state has been a pioneer in this concept and has actually been taking it from level gudaka prati barsa badhe chalchanti. The way the digitalization is being implemented in the state government, we have been operating for quite some time, and it's mind-boggling. So I think because you cannot escape the digitalization process as far as decision making is concerned, or as far as the implementation of decisions are concerned. So आमମାନଙ୍କର ArcelorMittal and Nippon Steel ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଞ୍ଚିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି that in India it is more like a startup, because the two global leaders in steel making, ArcelorMittal of Europe and Nippon Steel of Japan, they came together, formed a joint JV, and as a first step they have taken the assets of the erstwhile SR Steel. So following which, I think at Paradip we have a pellet making facility, and also at Keonjhar we have the mines and a beneficiation plant with the slurry pipeline. Amanco, we have been interested, we have signed an agreement with the state government to set up in the first phase a 12 million ton steel plant with an investment of 50,000 crores in Kendrapada. Now this is a big challenge, because Kendrapada is a district without any industries till date. The people are industrious. They have been Kendrapada लोक बाहर जाके बहुत बढ़िया काम करती, but the per se district रा किसी आज पर्यंत industry नहीं, and this is a venture and we are committed to do it. Now coming back to our experience per se of ease of doing business in Odisha. So forget about the ranking. I think the practical experience, because ease of doing business जो report karanti, they also take feedback from the various users of the state government's initiatives. So I think we have found here, so it's not about whether you are at a level of 29 or you are at a level of 4 or 5 or you are among the super or the achiever 6. Because what is more important, that is an annual number, and again next year when the assessment will come up, you will find that the number has changed, either it has come up or gone down. So what is more critical is the consistency, is rather the intent and the approach, and the consistency in both intent and approach. I think for the several, I think nearly 2 decades, and under the leadership of Sri Naveen Patnaik ji and the team, I think we have found a highly committed team who are very serious about the entire industrialization process, facilitating it, and ensuring that the people who are the recipients of their services are delighted. Apart from the Go Swift, I can say that under the labor department we have come up the Pare Shram. So that is another portal, and there is a tremendous online linkage with the Go Swift portal of it. The state government in the recent times, we have seen that they have institutionalized, especially for the MSME sectors, every district headquarters there is a regular visit of very senior
team members from the state government, including the very senior bureaucrats. The whole team travels to the districts in a proper forum. They interact with the various MSME sectors, understand their concerns, and come back and are also addressing those concerns. So that is a huge involvement at the ground level. Similarly, we find even for the larger corporates, there is a very rigorous and regular monitoring mechanism is there at place. At the Bhubaneswar headquarters level, at the district level, with the various other, for example, the industries department and so many other departments that we work. And we are amazed a lot of time that they act as a more cohesively and much more professionally as a project management jemti kara jaye. There is project timeline baneiki taku monitoring kariki kota ko jagar atkila kete ye hela. Sometimes we find that they are much more equipped and well adapted to that process than us also. So that has been highly impressive about the state government. Another aspect I would like to say, the decision making of the state government, and also the speed at which the decisions are implemented at the ground level. That has been fantastic. So all inclusive, what I would say, that ease of doing business, that number, so that is, let's keep that separate. The state, or whether it is the state government or at the national government, I think they have a very critical role to play, but they are more of an enablers. The real challenge is for the entrepreneurs to come forward. I think in that aspect, Startup Odisha, skill development initiatives, those are the things and the key things which are going to actually make the difference. Because large corporates will take they have a whole set of other decisions to do for their business decisions. But to take the whole masses along with us, we need to have grassroots level entrepreneurs, we need to have grassroots level the various highly skilled people. Because these are the key challenges that we are still facing. And I think combinedly, as a society, we need to join hands with the state government and not just depend upon the state government, and ensure that, yes, we take this forward, because the movement has started and to me it is irreversible. So it is just a matter of the intent of all of us, how fast we take this forward. So that's it. I would like to again thank you, all of you, and for your time and patience. Thank you. Thank you very much, sir. Ajira मुख्य अतिथि श्री राजीव शेखर साहू, चार्टर्ड अकाउंटेंट, graduated in commerce from Ravenshaw College and qualified as a chartered accountant in 87 and became a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India in 1992. He is one of the promoters and principal partners of SRP and Associates Chartered Accountants. अनुरोध करुछि आजिर मुख्य अतिथि को से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। नमस्कार, शुभ संध्या। चेयरमैन समय ग्रुप, the gentleman politician Sri Chiranjeev Biswal. I know the name long before, while in school and college, as a good middle order cricket player, good middle order batsman. The dynamic lady entrepreneur from the state, Sukirti, who has created sensation in the state
by organizing the Women Conference, Women Business Conference from ICC. I've also heard a lot about Mr. Samarendra Misra, the largest egg producer from the state of Orissa. Mr. Brahmananda Meher, another very dynamic entrepreneur from Balangir, who was again in the jewelry business, has done very well. Mr. Soumitra Patnaik, head corporate ArcelorMittal Nippon Steel, and from IMFA, Mr. Kishore Mohan Mohanty, the distinguished, very senior advocate and Advocate General of Odisha, Sri Ashok Parija, and Mr. Mohanty, the government advocate, distinguished guests, ladies and gentlemen, and friends from media. I am indeed privileged to be invited as Chief Speaker and later on upgraded because of the absence of the ministers. So, thank you very much. In fact, for a conclave like this, I was not sure whether I am a fitting Chief Speaker or not. But you are such a nice gentleman that it is very difficult to refuse your invitation. So, I accepted for whatever its value is. The subject is very interesting. The ease of doing business, the business conclave, Odisha context, Indian context, and the way we have been growing during the last few years. I'll give some statistics of Odisha. In 1999-2000, Odisha was under debt trap. Debt trap means when you borrow money to repay the loan, it is called debt trap. And that was the situation in 99. The size of the budget was only 6,500 crores. The total budget was 6,500 crore. And Odisha was living on wage and means loans and the overdraft from Reserve Bank of India. In a period of 22 years, under the leadership of Sri Naveen Patnaik, under a very stable government, the 22-23 budget size was more than 2 lakhs crore, and the revised budget will again go up beyond 2 lakhs crore. And from that, those who can imagine the tremendous improvement. In fact, Odisha has been growing year after year more than the national average. And one very beautiful thing which is there inside this budget, that our debt বা ଆମର ଋଣ କେବଳ 18-19% of GSDP, जो समय सबु भल भल स्टेट से महाराष्ट्र कहतु, हरियाणा कहतु, राजस्थान कहतु, तमिलनाडु कहतु, कर्नाटक कहतु, समस्तंकर डेट प्राय 25-30 बा 32% रे पहुँचलानी एवं तांकर प्रॉब्लम अनेक। एवं आउ दीट स्टैटिस्टिक्स देवी जे ओडिशा रिफॉर्म रे समस्तंकटू आगुआ ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म एवं तार उदाहरण होची जे माइनिंग सेक्टर रे जो रिफॉर्म हेची सेथिरे
2021 रे रेवेन्यू थिला केवल 13,000 कोटी एवं जो अमेंडमेंट आसिला एवं ओडिशा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कला केवल माइनिंग सेक्टर रु 21-22 रे 48,000 कोटी तामने मच मोर देन 3.5 टाइम्स ओडिशा रेवेन्यू बढ़िला एवं वर्तमान ओडिशार निजस्व आय लक्षे कोटी जोटा कि 50% ऑफ आवर टोटल बजेट साइज सो आमर डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल रेवेन्यू कमी जाइछि एवं ओडिशा आगुरु जो अनुदान उपरे निर्भर करथुला आज ओडिशा निजस्व आयरु सेही प्रोजेक्ट गुड़िक इम्प्लीमेंट करि पारुछि यथा रेलवे प्रोजेक्ट वर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट निजे कंट्रीब्यूट करुछि रेलवे प्रोजेक्ट पाई तेणु ओडिशा एही परिस्थिति रे प्राय विगत 22 वर्ष भितरे अनेक उन्नति करिछि एवं सेही समय रे मु कहबी जे भारत मध्य अनेक उन्नति करिछि एवं तार जो परिस्थिति आपण देखुचंती आपण जदि गोटिए छांचरे देखिबे जे श्रीलंका एग्जाम्पल तो न कहवा भल जो परिस्थिति है पाकिस्तान कहतु बांग्लादेश कहतु म्यांमार कहतु नेपाल कहतु जदि आम नेबरिंग कंट्री हिसाब से देखा आम परिस्थिति ए समस्त बहुत भल एवं सारा पृथ्वी रे जेमती अन्य वक्ता माने कहते जे इन्फ्लेशन कहतु फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहतु ए सबु क्षेत्र रे भारत अनेक आगे एवं उभय भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार जो दिग को बेसी प्राधान्य देइचंती सेटा होची ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएटिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिंग न्यू स्टार्टअप्स एवं जेते रिफॉर्म करा जाय पारिबो जेते जल्दी एगुड़ी करा जाय पारिबो सबु क्षेत्र रे मैक्सिमम स्टेप्स निया जाइछि एवं आगु को मध्य आहुरी अनेक स्टेप नबार अछि किंतु मोर कहबार अछि जे केवल पेन एंड पेपर रे रिफॉर्म करिदेले तार फल आमे हुए तो पाई परिबा नाही संपूर्ण फल पाइबा पाई आमको ग्राउंड लेवल देखा पड़ो जेमतिया श्रीजुक्त मिश्र कहते जे तल स्तर रे केवल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमाने जदि बुझिबे बिजनेस रो इम्पोर्टेंस सेथिरे सॉल्यूशन सेटा बुझिबा दरकार किंतु सेथिरे केवल सॉल्यूशन आसी परिबो नाही जदि सॉल्यूशन आसीबा दरकार ता संगे संगे सोसाइटी रो समस्त इन्वॉल्व पार्टीज से लोकल एमएलए कहतु लोकल सरपंच कहतु लोकल ऑफिसर कहतु से तहसीलदार बीडीओ ऑफिसर इंचार्ज ये समस्त को बुझिबा दरकार जे ए बिजनेस आम समस्त पई होछि बिजनेस मैन हुए तो प्रॉफिट पाई पारि थाए किंतु तार लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा सोसाइटी पाउछ तेणु सोसाइटी जेतेबेले तैयार हब सेतेबेले जो एंटरप्रेन्योर माने आमे कथा होतले जे किभली भाबरे ए परिस्थिति आसीबो जो थिरे बिजनेस भल चलिया पई गोटे बड़ जिनस होची अनसर्टेनिटी को केते कमेबा एवं जो जिनिस पाई आमे जो को अदरकारी चिंता एवं सेटा कई एंटरप्रेन्योर निजे तैयारी करेनी मैक्सिमम टाइम किछि लोक तांकर छोट स्वार्थ पाई बिजनेस को हैरान रे पकेया को चेष्टा करती एवं सेटा पाई आम सोसाइटी जदि चाहूची जे अनएम्प्लॉयमेंट कमिबो
रोजगार बढ़िब आमर शिक्षित युवक माने काम पाइबे ताहले ए समस्ते एंटरप्रेन्योर मान को एनकरेज करिवे सपोर्ट करिवे एवं एई सपोर्ट माध्यम रे आमे आम बिजनेस को आहुरी गतिशील करि परिबा आहुरी एक्सपीडाइट करि परिबा एवं जेतिकी मार्केट पोटेंशियल अछि हमरो ताकू आमे फुल्ली कैपिटलाइज करि परिबा किंतु अनेक समय देखा देइछि एई न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति माने बिजनेस को हैरान करने द्वारा यही जो कष्ट करी श्रीजुक्त मिश्र हुंतु मेहर हुंतु बा स्वीकृति हुंतु बा बड़ बड़ प्लांट आर्सेलर मित्तल हो JSW स्टील हो आमे प्रत्येक प्रॉब्लम क्रिएट करबा बेले तांकर प्रोजेक्ट जेतिकी जेतिकी डिले हबो सेतिकी तांकर अनवायबिलिटी बा तांकर सक्सेस कमिबार अनेक चांस अच्छी एवं छोट बिजनेस तो से छोट जेतेबेले आरंभ करूचंती आमे तांको एनकरेज करबा दरकार किंतु अनेक समय देखा देइछि विभिन्न लोक तांको हैरान करिया को चेष्टा करथांती एवं हैरान कला परे टिके कलर टेकिकरी ता सांग मानन कोंती जे जानिछ आज से अमुक लोक आसला तार काम थिला मो पाखरे मु ताकू कलिनी ताकू कहली ये हे परिबो नाही किंतु से कामटा हबा कथा एक्चुअली एई जो एटीट्यूड रो परिणाम होची जे अनेक बिजनेस बंद हो जाइछि एवं एटा गोटे बहुत पेनफुल जिनस बहुत कष्ट एवं दुखदायक जिनस जे जेतेबेले जने एंटरप्रेन्योर अनेक कष्ट करी राति दिन मेहनत करी निज कैरियर को सैक्रिफाइस करिकी से जने एंटरप्रेन्योर हवा को चेष्टा करे एवं लोक मान से निजे चाकरी करेनी से चाकरी दिए से समय रे आमे जदि ताको हैरान करिबा ताहले मु भाबुची एटा हमकु वर्तमान आमर चिंताधारा को बदलैबा को पड़िबो एवं चिंताधारा अनेक भाव में बदली जाइछि मध्य किंतु आहुरी किछि स्टेप नबाकू पड़िबो जो थिरे ओडिशा अन्य स्टेट जो माने एडवांस स्टेट अछंती से माने जो प्रकार आपण एग्जांपल होची गुजरात देखंतु तमिलनाडु देखंतु सेठी जो प्रकार एंटरप्रेन्योर मानंकु सहाय्य करा जाउची आमर मध्य सबु स्तर रे सेही प्रकार सहाय्य कले आमे निश्चय आहुरी आगु को जिबा फास्ट मूवमेंट करिबा अधिक लोकों को रोजगार देबा आपन को कहि रखे ओडिशा रे बेरोजगारी गोटे अलार्मिंग पोजिशन रे अछि एवं एटा हम समस्तंकर दायित्व जे किबळी भाबरे आमर ए बिजनेस सरकार चाकरी दे परिबेनी सरकार होमगार्ड कांस्टेबल बा यही प्रकार बहुत लोकों को चाकरी दे बा सेक्रेटरी भर्ती कर दे चाकरी दे लोकों को संतुष्ट करवा ठीक नुह स्मॉल गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस एवं सेथिपई दरकार प्रत्येक लोक आगु को आसंतु एवं एंटरप्रेन्योर होंतु सक्सेस आणंतु जदि सक्सेस आनिबे लोक माने मध्य तांको आहुरी रिकॉग्नाइज करिवे किंतु ए सक्सेस पाई किछि एफर्ट्स दरकार एवं जेतेबेले आमे केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पेपर रे नुहे ताकू ग्राउंड लेवल ले जो प्रकार सरकार उभय ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार चेष्टा करुचंती आमे जदि आउ टिके आम सोशल प्लेटफॉर्म रे ताकू सहाय्य करिबा ताहले आमर अनेक उन्नति हबो एवं सेथिपई आमे समस्त चेष्टित हवा दरकार आउ गोटे कहबी जे मु आज कथा होतली जने एंटरप्रेन्योर सांगरे से कहला जे गुजरात रे आपण जदि इंडस्ट्री करिया को चाहुचंती आपण अप्लाई करंतु ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हेकी अछि आउ आमे एप्लिकेशन परे सरकार खोजिबा आरंभ करिवे ताहले मु जानिछि जागा पई केवल वर्ष रु 3 वर्ष लागि जाए अच्छा जो इंडस्ट्री जागा पाइबा पई वर्ष रु 3 वर्ष लागि जाए से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन केबे करिवो एवं एमितिया नुहे जे बिजनेस पे गोटे
सेम प्रोडक्टर मार्केट परपिच्युटी रहिबो बा इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत रहिबो गोटे प्रोडक्टर समय थाए से समय भितरे जेतेबेले आपण प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करी तार बेनिफिट नहीं न पारिबे सेतेबेले से मार्केट पुणी कारण टेक्नोलोजी प्रत्येक दिन बदलुची तेणु आमे जदि से समय अनुसार ताल दे न चलिबा गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु हरियाणा भली स्टेट संगे कम्पीट न करिबा एवं भारत वर्ष हिसाब रे जदि आमे जर्मन जापान यूएस एमानक संगे ताल दे आमे कंपटीशन रे न चली परिबा ताहले बोधवे आमे पुणी थरे से पुराना पोजीशन को आसीबा एवं आउ गोटे सतर्कता मु कहूची जे आमर ओवर डिपेंडेंस ऑन माइनिंग इंडस्ट्री शुड कम डाउन आम बजेट रो सर्विस सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर आईटी सेक्टर आईटीएस सेक्टर यही सब क्षेत्र रे अधिक प्राधान्य देले हुए तो आमे आम फ्यूचर बा भविष्य को मध्य सिक्योर करि परिबा आमे एमतिया बिजनेस डिस्कशन रे भाग नेले हुए तो बेले बेले मु समय भूली जाइथिबी मोबाइल छाड़ी आसली से मोर समय थाए एवं सेठी मु देखलिनी डिनर प्राय तो रेडी हो साराणी तेणु मु आउ आपण मानक भितरे एवं जो भल डिनर चिरंजीव बाबू अरेंजमेंट करचंती मु सेथिरे आउ प्रतिबंधक हेबी नहीं अनेक समय रे लोक वक्तव्य सरिबा पूर्व ताली मारि दियंती ताहले आपणक समय हो गलानी आपण जानतु तेणु मु मध्य क्वाइट कॉन्शियस जे आपण माने ताली मारिया पूर्व मु मोर वक्तव्य शेष करी किंतु एतिकी कहबी जे आमर वर्तमान भविष्यत होची नुआ टेक्नोलोजी नुआ ओरिएंटेशन स्किल्ड मैन पावर न्यू स्टार्टअप एवं गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे आम गोटे नुआ जेनरेशन एंटरप्रेन्योर तैयारी करि परिबा आउ एई समय रे आमे चेष्टा करिबा सदाबेले देश राज्य समाज तापरे आमे निज कथा चिंता करिबा बा निजे एमिते काम करिबा सेथिरे देश राज्य एवं समाज बेनिफिटेड हबो एवं आमे समस्त मिलिमिशि आगु को जिबा आउ थरे समय परिवार को एवं चिरंजीव बाबू को मते डाकी थिबारु मो बहुत बहुत धन्यवाद एवं भाबुची आपण माने आशा करिया पूर्वरु मु मोर वक्तव्य शेष करुची बहुत बहुत धन्यवाद वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करने मु अनुरोध करुच्ची समयर न्यूज एडिटर श्री पप्पू महांती को। हेलो नमस्कार। समय बिजनेस इनसाइट 2022 आज ये संध्यार आमर जो सम्मान्य अतिथि माने आज मंचासीन हेले से माने तांकर बहु उपादेय मतामत आज आमर उपस्थापन करिसंती। आपण जानिसंती समय दीर्घ 25 वर्षर यात्रा भितर सबु बेले गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु को गुरुत्व देई थाए विशेषकर राज्य देश आउ समाज जोटा कि आमर मुख्य अतिथि कहिले से विषय चिंता करवा तापर आम कथा चिंता करवा आमे सही आदर्शटा को ग्रहण करि आसीचु सेतिपई सही परिप्रेक्षी रे आमे सबु वर्ष समय गोटे गोटे कनक्लेव करे आउ गला वर्ष मध्य गोटे कनक्लेव करिथिला ता पूर्व वर्ष गोटे कनक्लेव करिथिला गला वर्ष कनक्लेव रो विषय वस्तु थला ओडिशा इन नेक्स्ट डिकेड सही कनक्लेव रे मध्य बहु विद्वान व्यक्ति विशेष जोग देई आमको आभिमुख्य तांकर देशर विकास क्षेत्र में कौन आभिमुख्य रहा कथा सरकार प्रशासन आम मानकर से विषय उपस्थापन करते से आम बहुत आम शुभेच्छा पाई एवर्ष आम बिजनेस इनसाइट 2022 ये विषय वस्तु उपर आम कनक्लेव करूँ आमर सौभाग्य जे आज ये मंचरे ओडिशार बहु जनाशुना लोक जो मानक आपण संपर्क
आमे परिचय देवाटा मोर धृष्टता हम से आज उपस्थित अच्छा आउ जो दिग्दर्शन देले जो मानस मंथन ये चलला से ओडिशार विकास प्रक्रिया को निश्चित भाव में त्वरान्वित करिब ए विश्वास आमर रही तेज ये परिप्रेक्षी में आमे आज पाखे ऋणी हो जाइचु से जो भाव में मूल्यवान समय देकरी आज आम अनुरोध रक्षा कर आम चिरंजीव सार अनुरोध रक्षा कर आज मंच उपस्थित हो समय देइचंती से समय परिवार पक्षर से कृतज्ञता जनइबा धन्यवाद दबा आमर नैतिक कर्तव्य बोली मु मन करे से प्रथम मु आमर आज जे मुख्य अतिथि राजीव शेखर साहू ओडिशार जनाशुना ना तांको विषय में आगुरी आमर एंकर कही सारी मु धन्यवाद देवी तांको जेतेबेले आमे ए विषय अनुरोध कलु चिरंजीव सार जो गोटे फोन कल कले से विदाउट एनी हेजिटेशन से कहले सम्मति प्रदान कले आउ निर्धारित समय भितर से आसी पहुँची यही व्यक्तित्व जना पड़े जे से कौन फर्मालिटी मेंटेन करती ना राज्यर विकास आउ गोटे गठनमूलक सकारात्मक आलोचना को से सब उत्साहित करती आउ जोग दिखती आउ किछि मार्गदर्शन करती से दिगरे से जे अग्रणी आ नेतृत्वर अधिकारी ताहा आज प्रमाणित होइछि तांको मु समय परिवार पक्षर अशेष अशेष धन्यवाद देवी कृतज्ञता ज्ञापन करी। नेक्स्ट अच्छा आमर सौमित्र पट्टनायक आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया ओडिशा फैसिलिटीर से होउचंती कॉर्पोरेट हेड तांको मध्य आमे निमंत्रण कलु आमे कहलु सार देखंतु इज ऑफ डूइंग बिजनेस व्हेयर ओडिशा स्टैंड उपर आमे गोटे आलोचना करछु तांको जतन मु कहली सी मध्य बिना द्विधारे से सम्मति प्रदान कले आज मंच रे उपस्थित अछंती आउ सी मध्य बहु उपादेय कथा आमको उपस्थापन कले जोटा कि निश्चित भाव में सरकार प्रशासन आउ जो माने उद्योगी अछंती से निश्चित भाव में ग्रहणीय हम ये विश्वास आमर रही। नेक्स्ट अछंती आमर इंजीनियर ब्रह्मानंद मेहर से हेउचंती आमर ओडिशार जने गर्व कहले अत्युक्ति हेब नाही से निजे कहूतिले बलांगीर रु आसिकरी जड़े व्यवसाय क्षेत्र में निजक प्रतिष्ठा करवा यहाँ निश्चित भाव में गोटे कष्टकर व्यापार किंतु जहाँ से आज अरुंधति ग्रुप भली गोटे बड़ ग्रुपर से मैनेजिंग डायरेक्टर ताको दिग्दर्शन दौरान तार नेतृत्व नौकरी से आमर तांको मु विशेष कृतज्ञता ज्ञापन करी कहीं गोटे इंटरनेशनल ज्वेलरी कॉन्फ्रेंस चलता मुंबई में तांको जो अनुरोध जो जोगाजोग कली से मत बहुत खुशी हेले से कहले मो टिकेट रिशेड्यूल करी आपण प्लाटफर्म में मुझे जोग देवी आपण आमको डाकी निश्चय निजक गौरवान्वित मन कर मत कौन अनुरोध करा गोटे बड़पन परिचायक मु आशा करुच्ची जे ब्रह्मानंद बाबूर ये जो आमर समय परिवार प्रति तांकर जो शुभेच्छा आउर जो मानवीय महानता सबुदिन अतुट रही ब्रह्मानंद मेहर महाशय को मु समय परिवार पक्षर अभिनंदन जनाऊँगी स्वागत कली आउ कृतज्ञता ज्ञापन कर धन्यवाद अर्पण करुच्ची। अन्य जड़े अच्छा आमर सी आमर ओडिशार गर्व कहले अत्युक्ति हेब ना से होउछन्ती मिसेस सुकृति पट्टनायक से मैडम आम सांगे आगुरी अच्छा एवं भी अच्छा थरे आम करूँ समय लाइव गोटे महिला वुमेन डे पालन करूँ से मुझे डाकी सी आसी आम मंच से जगह बहु उपादेय मत देते जिते सुकृति मैडम को मुझे कहली निमंत्रण देली फोन रे जोगाजोग कली सी कौन प्रकार ये नकरी से निजर सम्मति प्रदान कले आज निर्धारित समय आसिक से विशेषकर राज्यर महिला उद्योगी मान संपर्क में जो भाई भाव में वक्तव्य उपस्थापन कले दिग्दर्शन देले आह्वान कले सेटा निश्चित भाव में महिला एंटरप्रेन्योर जो मैंने अच्छा ओडिशा रे तांको अनुप्राणित करिब आमर ये जो आलोचना आमर जो बिजनेस ओडिशा इनसाइट 2022 एक आमको प्रेरणा दब जहाँकि आमको भविष्य में आम पाखे चिरऋणी रही आज चिरऋणी रोचु मुझे धन्यवाद दूसरी कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। विशेष तापर रहा आमर किशोर मोहन महांती तांको आम समय परिवार जड़े लोक बोली आम ग्रहण कर दीचु गला कनक्लेव्रे सी आसी एटी मूल्यवान मतामत उपस्थापन करते एथरक चलित थर जो मु निवेदन कली अनुरोध कली से कहले पप्पू मु निश्चित भाव में जीवी मत खाली टाइमटा कहतु मु टाइम कहली आज से निर्धारित समय उपस्थित रहीकि मूल्यवान मतामत उपस्थापन करिसंती। आमर आसिले मु समरेन्द्र मिश्र
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲି ଆପଣ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ମତ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ବୃହତ୍ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଏଠି କହିଲେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଅଲିଟି କଥା ସେ କହିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଗଲେ ସେ କଥା କରାଯାଇପାରିବ, ସମ୍ଭବ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କେମିତି ସେଥିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଇଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମର ଏଇଭଳି କନକ୍ଲେଭ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ କନକ୍ଲେଭ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତାର ପଛରେ ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେମାନେ ସହଯୋଗ କରି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଇଏ କରୁଥିବାରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। आम सभा को आम ये रखुचु। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक बहुमूल्य समय दे आम कार्यक्रम में जोग दे धन्यवाद। If sky is the limit, what would you like to be in life? I want to be a doctor, scientist, lawyer, entrepreneur, engineers, agronomist, good chef. What if world-class faculties help you to reach there? Education is the passport to the future. Shiksha or Anusandhan, deemed to be university. A bright future begins here.